नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात राजकोट जिले के उपलेटा में सिद्धनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हर साल कई तरह के सामाजिक प्रोग्राम किए जाते हैं, साथ ही सेवा के काम भी किए जाते हैं। और पिछले कई सालों से क्लाइमेट चेंज और पेड़ों की कमी को ध्यान में रखते हुए उपलेटा सिद्धनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट पेड़ों के मुफ्त पौधे बांट रहा है, जिसमें उपलेटा सिद्धनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोशल मीडिया फॉरेस्ट्री रेंज के सहयोग से उपलेटा शहर में अलग अलग तरह के पेड़ों के 1000 से ज्यादा पौधे मुफ्त बांटे गए। गुजरात राजकोट उपलेटा से सरफराज गौडी की रिपोर्ट। ઉપલેટાના આંગણામાં સિદ્ધનાથ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને સામાજિક વનીકરણ રેન્જ ઉપલેટા એમના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે જેની ખૂબ જરૂર છે। સારા ભારતમાં આવી પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે જાણીને ખૂબ આનંદ થયો છે। એમાંય આજે ગુજરાત છે જાગ્યું છે, એમાંય ગુજરાતનું ગરવીલું ગામ એટલે અમારું ઉપલેટામાં અવારનવાર આવા વૃક્ષોના આ વિતરણના કાર્યક્રમો થાય છે। એટલે સિદ્ધનાથ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને ફોરેસ્ટ વિભાગને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું। અને આપણી બધાની પણ ફરજ રહેલી છે કે ઝાડવાનું જતન કરીએ, ઝાડવા લઈ જઈએ તો વાવવા હોય તો જ લઈ જઈએ, ખાલી ફોટો પાડવા પૂરતા કે દેખાવ પૂરતા લઈ એ ઝાડને નુકસાન થાય છે, બધાને નુકસાન થાય છે। એટલે એક ઝાડ એક માણસ વાવે અને બહુ મોટો સરકારનો એક સંદેશો છે, એક પેડ માં કે નામ, માના નામ ઉપર, બાપના નામ ઉપર, પરિવારના નામ ઉપર આ વૃક્ષો જેટલા હોવાય એટલી આપણા બધાની શોભા છે અને આવનારી પેઢી છે એના માટે બહુ ઉપયોગી। नमस्कार, जयेश त्रिवेदी, प्रमुख सिद्धनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और उपप्रमुख राजकोट जिला शहर भाजप। आज रोज श्री सामाजिक वनीकरण उपलेटा रेंज तेमज सिद्धनाथ ट्रस्ट द्वारा 1000 उपरना वृक्षों वितरण करवामां आव्युं हतुं। अत्यारना तबक्कामां आपणे जोईए के खूब ज गरमी वधी रही है अने ओझोन लेयरमां गाबडुं पड्युं छे, तो आपणे एक ज करवानुं छे के जेम बने एम तेम वृक्षोने वावीए। करोड़ों वृक्षों की आज विश्व ने जरूर है, तो वृक्षों कपाता रहे हैं तो आपणे वृक्षों वावीए और मानवी की अमूल्य जिंदगी बचावीए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।